The one is basically a villa, and the idea is that it is the most high-end house of Pakistan. I don't like to call it the most expensive house of Islamabad or Pakistan, because I personally feel that just because something is expensive does not mean that it is the best. My father started in this line of work in 1954. He's also the person who's made the first commercial project of Islamabad of Blue Area. How he came into real estate was that during the day he used to work as a lecturer, and at the night time he used to take contracts. Well, in Pakistan, you spend 1 crore on a piece of land and you forget it. It's not very difficult to say that one day that 1 crore would be turned into 1 billion. But I don't think so it's good for the economy. I don't think it's good for the industry. So my competition has always been with myself कि यार ये मैंने किया, अब इससे बेहतर मैंने करना. Assalamu alaikum everyone and welcome to another episode of How Does It Work, a podcast by Pro Pakistani. आज हमारे मेहमान is the youngest real estate developer in Pakistan, or at least one of the youngest developers, Samama Randhawa. Thank you so much for being on the podcast. Thank you so much, Ayan. Thank you for having me. यार तो आपकी जर्नी अभी हम ऑफ एयर भी डिस्कस कर रहे थे, काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, लेकिन लेट्स स्टार्ट विद समथिंग दैट आई फाउंड रियली इंटरेस्टिंग. यू सेड दैट one of the projects you were looking to do, it was called The One, I think, is the most expensive house in Islamabad. What is that, and can you tell us a little bit about it? So basically, The One is a sub brand of Randhawa Developments. It started with The One Villa. It was called The One. But I really liked the project. I liked it so much that, I made a separate category in the Randhawa Developments. So The One is basically a villa, and the idea is that it is the most high-end house of Pakistan. I don't like to call it the most expensive house of Islamabad or Pakistan, because I personally feel that just because something is expensive does not mean that it is the best. So I would like to rephrase it and call it the most high-end house of not just Islamabad but Pakistan. And it's got to do with the journey that is mine. Because for me, I initially did not want to be a real estate developer. I became a real estate developer because this is something that my father used to do, and I had to get involved into this. And these are the kind of things that I've always liked. So if I was to develop per se economy apartments or something like that, that would have not been my thing. So it started off as a high-end house, just like any other in Islamabad. Then I started adding more things to it, and now the idea is that it is the most high-end house of Pakistan in every way. Because the problem in Pakistan is that when you say high-end, even the high-end houses or the high-end projects in Pakistan are not of the quality that they need to be. One of the reasons is because I would like to say that Pakistan में जिससे बोलते हैं ना जुगाड़ वाला काम चलता है, especially real estate में. So even the high-end houses, even the high-end projects, they are not up to the mark. And one of the reasons why is that the land, especially in Islamabad, becomes so expensive that whatever that you build upon it is a compromise. So the idea with The One was to make the most high-end house of Pakistan, and that's the reason why, number one, it's situated in Sector F63 and Street 1. So this is like the most high-end space in Islamabad, the most high-end residential space. So when you have got such a good location, you need to develop something which is equally good. But in this case, the idea was to exceed the location. That's why the idea of The One came, and it's still work in progress. And यार मुझे ये बताओ कि एज ए लेमैन व्हाट मेक्स समथिंग मोर वैल्यूबल, हमें क्या पता, मतलब इज इट द कंस्ट्रक्शन, इज इट द इंटीरियर, क्या क्या चीज़ें होती हैं दैट ऐड सॉर्ट ऑफ वैल्यू टू लग्जरी हाउसिंग? To luxury, see, the thing is, whenever you'll do a luxury project, it will definitely be at a good location. So I think the first thing that is most important is that the location needs to be thought through. So in our case, we had multiple plots on which I could have built, but when I started off, I wanted to start my project in F63. So the first option that a developer has is to select the location. So I selected F63. Secondary,
you would want the quality to be controlled. For example, a lot of developers are not builders themselves, or they do not have the experience of construction. So when you know how things are done, only then you can deliver quality. So I would say that location is important. Then whoever is building it, the builder. In our case, we are the builders and we are the developers ourselves. Then the design makes a big difference because, for example, if you're using a very high-end material, like nowadays there is a lot of design in Islamabad which is done on the minimalist line. But what people do is that they are using like really high-end tiles or really high-end marble, and they clad the floor, they clad the wall, they even clad the roof, a part of it. That's the easiest thing to do. But when you want to do something different, you need to have a proper design. And I always say that a good architect, a good interior designer is one that makes a really good design. So if you use a really high-end material like marble or wood, it adds to the look of that project. But even if you were going to use a very ordinary material, it would still look good. So yes, I think these all things are really important. And यार आपने बताया कि of course you have developer experience, you're one of the youngest real estate developers here, लेकिन आप बनना भी नहीं चाह रहे थे and sort of stumbled into it. तो क्या, can you walk us through your journey a little bit? What happened? Basically, वो कहते हैं ना कि घर की मुर्गी दाल बराबर. So something that you have, you tend to not really value it. And I don't know, it just so happened that, I was never that kind of a person who thought growing up I would come into real estate or into my father's business. Um when I was really young, I wanted to be a cricketer. So, like, if you want to be a cricketer, you would not expect yourself to be a real estate developer. And then as you grow up, your preferences change, and I had other things in mind also. But the main reason why I came into real estate was because my father is quite old. He's, mashallah, now around approximately 90 years old. And so, like, when we were growing up, we were always told that, your father is really old, your father is really old. Although, like, he does not look his age, and he's still actively working. But yes, like, now since that I've taken over that, it's become much easier for him. But I came into real estate because I had no other option. And I just felt that I might have the time in life, because I had age by my side, that I might be able to fulfill all that I want to do, fulfill all my dreams, maybe later on in life. But since my father was so old, I wasn't sure that he might have the time. So that was the main reason why I came into real estate. And but eventually it all worked out. और आपके वालिद साहब, हमने इनका जिक्र किया, माशाल्लाह he's quite old now and he's done quite a lot. Can you walk us through a little bit about what Randhawa Developments is? आप लोगों ने शुरू कहाँ से किया? How old is the organization? It's almost, mashallah, almost 70 years old, a little less than 70, 7 decades. My father started in this line of work in 1954. Sure. Yeah. He was basically a lecturer. He topped his university. And on the side, he started working as a contractor, part-time contractor. And he had no idea, because he had done his MSc in botany. So just imagine, like, someone from that background coming into real estate. So how it started was that I think it started with the fact that my father has always been a family man. So he came from a very difficult, I would say, life, in the sense that as compared to today, So it wasn't that it was too difficult, but, he started from scratch. He had a big family. He was the eldest of all the siblings. He would not take any pocket money. And when he topped his university, he was offered a job as a lecturer. And he used to earn 144 rupees in the 1950s. And all of that he used to give to his mother.
And out of that, she used to say, my grandmother used to say that, at least keep 44 rupees for yourself. You're giving us 100 rupees. You don't take anything from us. So at least take 44 rupees for your own expenses. But he was like, no, mom, this is for you. And I'll manage something on my own. So how he came into real estate was that during the day he used to work as a lecturer, and at the night time he used to take contracts. So the first contract that he had, I think, if I remember correctly, it was like a mud house. So जो मट्टी के जो होते हैं ना, मतलब this is something that I just recently found out. मुझे भी नहीं पता था. So he started from that, और वो चलते गए. And from 54 to 62, like, he worked in Faisalabad, and he took a lot of contracts. Back in the day, he introduced this concept of economy apartments, because if you look at Lahore, even today, people still don't really like living in apartments. It's a rather new concept. And Lahore is the capital of Punjab. So just imagine Faisalabad. So it wasn't Lahore, it was Faisalabad. And in the 1950s, to have an idea of making economy apartments and then leasing them out. And that is what he did. So since from 54 to 62, he worked as a contractor. From whatever that he had made, he bought a few plots. He made economy apartments on them. He leased them out. And I think he leased them out at around something between 600 to 800 rupees per month. So that was almost like 4 or 5 times what he used to earn. And once he was done with that, he went to his mother, and he said that, I used to earn 144 rupees. This is like 4 or 5 times what I used to earn. Once all of you are now sorted, so I would want to now go and pursue my dream. And his dream was to make it big in Islamabad, which had recently been crowned the capital of Islamabad. His father was supportive. His mother was also supportive, but you know how mothers are. So she made him promise that you have to come back home every month. And that is something that he did until she was alive. And yeah, so he moved to Islamabad in 62. He worked, to make it like really short if I have to cut it down. So through the 60s and 70s, he worked as a contractor. Then he became a big-time builder in all of this. He's the original developer of Islamabad, as most of people in Islamabad call him. And in the 70s, what he saw was that, also I forgot to tell you that, he's also the person who's made the first commercial project of Islamabad of Blue Area, because Blue Area is an iconic real estate strip. I would say it's the most iconic real estate strip of Pakistan, and so it's a big thing that Bilkul. I proudly tell everyone that my father is the one who started off in Blue Area. His project was the first one. And over the years, like, from a contractor to a builder to a developer to a landlord developer. So now, over the years, what we've learned is that, especially in Pakistan, and more specifically in Islamabad, it's better to retain property than to sell it off. That's a long story. I'll tell you. वजह ये है कि it's my opinion, and also it's my opinion is based on what my father tells me, and he used to, like, trade in property. He used to make houses, make properties, sell them off. He did that for almost 30 years. But what he told me, and what he always till date tells me, that he said that I used to work, I used to build a house, which used to take 6 months, 1 year, 2 years, depending on how big a house was. He used to sell it off, he used to flip it. It would always be a profit. But he said that over the years, when I would look back, and I would sometimes think of buying that property back with all the profits that I had made during that time, I would still not have that kind of money. Capital appreciation बहुत बहुत ज़्यादा था, और आज तक है.
for better or worse, and I would say कि ये ठीक नहीं. I would say it happens for the worse. Land is not supposed to appreciate so much. Like, you know, you look at any country, you look at America, you know, it's a country that everyone looks up to. So, you know, you can take out Manhattan and exceptions like that, but over there, the land is still reasonably priced, and the superstructure is where the money goes into. And the thing is that, for example, in Pakistan, you spend 1 crore on a piece of land and you forget it. It's not very difficult to say that one day that 1 crore would be turned into 1 billion. That is the kind of return that there is on land in Pakistan. It's good for certain people, but I don't think so it's good for the economy. I don't think it's good for the industry, because just think that, you know, you've invested 1 crore and that turns into 1 billion. Now you've made a profit of 99 crores, or almost 1 billion you've made. Now just imagine that that 1 crore plot has appreciated into 5 crores. That's a good enough return. But that 95 crores comes from the development that you do on it. So when that majority of that amount is spent on the economy, it is spent on the real estate industry. And nowadays, like, you know, ever since Imran Khan has mentioned, everyone knows that, you know, there are 50, 60 allied industries, and everyone says that, you know, says this, but not everyone understands the background behind it. So in very simple terms, when there will be actual construction, there will be 50, 60 allied industries. Thousands of families will be earning from it. So rather than one person doing nothing, adding nothing to the economy, just like, you know, making an investment and forgetting about it and making a fortune out of it, why not work in all that while, keep yourself active, and then you're also winning, and like so many people with you are winning. So I think that's a better approach. और इसकी भी वजह होगी ना शायद कि कंस्ट्रक्शन पे इतना तवज्जो नहीं दिया जाता इन कंपैरिजन टू अदर कंट्रीज, बिकॉज यहाँ पे लैंड अप्रिशिएशन ही इतनी ज़्यादा हो जाती है. बट along with that, what I wanted to ask you was कि so you come into this situation, how old are you? 32. 32. So you're young, and you come into this situation, and of course your father has this, mashallah, massive legacy. क्या लोग आपको ये कहते हैं कि यार आप छोटे हो, आप बच्चे हो, आपको क्या पता, इस तरह के मसले होते हैं? बिल्कुल. I've heard that all my life. Yeah, it's interesting that you've asked that, because that is something, it doesn't affect me. It doesn't affect me at all. But yes, this is something that I've always heard. And I remember that, you know, once, like a few years back, I was sitting with my father, and we were sitting with, you know, like, you know, certain people from the industry, and one of our partners in one of our projects, one of the plots actually, project to nahi. So he was like, you know, Khalid sahab, oh, how old is Samama? He was like कि 25 साल का है, and he was like, oh, 35 साल का है, तो चलो बच्चा अभी. So 10 साल बढ़ा के भी he was like 35 साल का है, and I was 25 back then. तो वो कहते कि नहीं 35 नहीं 25 साल का है. He was like, अच्छा, 35 साल पे उनको लग रहा था कि बच्चा है, तो 25 साल पे तो बिल्कुल ही. और उसके पीछे वजह ये है कि when you come into real estate or any industry, उसमें होता क्या है कि it takes a while for you to reach a certain level. So I think I have to thank first of all Allah, and then my father, that, you know, he's given me this platform. और वही वाली बात है कि like I had no other option but to be here, you know, because my father, he's so old, तो किसी को तो संभालना था, तो वो that came on to me. So उस वजह से there might be people, इस तरह के लोग होते हैं, like, you know, that अपने पेरेंट्स के साथ काम पे जा रहे हैं, और एक सेल्फ असाइंड होता है जी, डायरेक्टर है, CEO है, इस तरह के तो बहुत सारे, आई एम श्योर बहुत लोग होंगे. बट द ओनली डिफरेंस हियर इज़ दैट आई एम एक्चुअली द चेयरमैन ऑफ द कंपनी दैट वी रन. और उसकी वजह ये है कि आई हैव बीन विद माई फादर फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम. एक्चुअली इवन व्हेन आई वाज स्टडीइंग, इवन व्हेन आई वाज अ किड, तो मैं उनके साथ हमेशा, लाइक, यू नो, काम पे जाता था, साइट्स पे जाता था, लाइक, यू नो,
खेल, हम इवन अपने प्लाजास पे प्रोजेक्ट्स पे खेल रहे होते थे, मतलब यू नो उस तरह की एक चीज़ है कि आप, यू आर जस्ट बॉर्न एंड ब्रेड इनटू दिस इंडस्ट्री. तो ये कुछ लोग कहते हैं मतलब दैट यू आर टू यंग, कि यार ये तो बच्चा है या इसको क्या पता. तो बट इतना ज़्यादा इफेक्ट मुझे इसलिए नहीं करता क्योंकि most of our projects are independent. I mean, we tend to retain our projects. So we buy the plot on our own, we construct it on our own, then we lease it out on our own. We don't have to sell in the market. So there needs to be no projection कि यार कि मेरे पीछे के मेरा कोई 30 साल का एक्सपीरियंस है, you know. तो it doesn't really come in the way, but people have this perception that if you are young, you're incompetent. If you're young, then you can't be really heading a company. I've never felt that way. If I felt that way, I would have never, like, you know, entered this industry or my family business. And yeah, it doesn't really affect me, but you know how people are and how perception is. So yeah. And does that somewhat spur you on ever कि आप कहते हो कि यार अच्छा चलो, you know, time will tell, पता चलेगा कि यार कौन सही कह रहा है कौन गलत कह रहा है, or is that something you just like, it's noise? I think it's noise for me because I'm not that sort of a person that, like, you know, if someone says anything, it really doesn't get to me. Not that it doesn't get to me, sometimes it does, but I never give anyone that kind of importance that I need to prove anything to you. But there is so much that I need to prove to myself, you know. And while we talk about naysayers, while we talk about people who say you're too young to do this, or you know, you're too naive or whatever, you know, and these are the people that are not even involved in our business, you know. It's not like, you know, any partner or anyone that we are taking money from or we are selling to. So just imagine, like, if I was like trying to sell something to someone at this age, you know, or maybe 5 years back. So but the only person that I need to prove anything to is myself, and yeah, and my father. But he's one person, he's very difficult to impress. So how is that relationship? मतलब वो एक sort of transfer of कह लें power या transfer of authority आपको जब दी गई, was that a difficult transition for him, for you, and how is that relationship now? Do you still go to him for advice? Yeah, not really. Definitely, I go to him for advice. We have a very different perception of business, and he thinks very differently from me. But I think because obviously, like, you know, there's almost a 60-year gap between us. Generational so, gap है literally. तो generation gap है और normal से ज़्यादा है. तो but what I feel is that, and from all that I've heard, I think I am his younger version. So because obviously someone like, you know, who's in his 90s would not be thinking someone who's like much younger than him. So वो चीज़ तो है, but he's very supportive. Yeah, and he's become more supportive over the years because I've proved myself to him. But that is something that, you know, I thought it would have been much easier. I remember that my first major project, like, you know, something that I did on my own totally. I was 21 and a half when I started on this project because I tend to, like, you know, follow my dreams or something that I've always liked. So I always had that knack for like owning a restaurant, you know. It was something that just felt natural, something that I always wanted to do. So I was 21 and a half when I started off. I was 24 when it got launched. And in the way, I learned a lot. But I remember going to my father and I was like, you know, I've built this, but I'm never coming into this industry because it was so difficult. कौन सी industry थी? Real estate. और restaurant का नाम क्या था? It was called Entourage. अच्छा हाँ, जो F7 में होता था. जी बिल्कुल, बिल्कुल. ठीक है. तो अच्छा, मज़े की बात ये है कि it was a restaurant, but for me it was more of a real estate project. Why? Because most of my focus was on the way it looks. I remember the interior being insane. मतलब मैं बच्चा था when I went to it. हाँ, I think I'm a little younger than you are, लेकिन मुझे याद है walking in and being like, whoa, this is different. अच्छा. Because हमने कभी इस्लामाबाद में ऐसा इस level का, you know, structure या it was just the interior, the design, everything was so different. Exactly. हमने कभी ऐसी चीज़ देखी ही नहीं थी. और idea ये था, like, you know, in all that I do, मेरी कोशिश हमेशा यही होती है
कि it needs to be something that is different, that would blow the industry away. और इन पाकिस्तान लाइक यू नो बहुत सारी इनोवेशन यहाँ नहीं होती, तो यहाँ पे ये चीज़ अचीव जो इन ऑल ऑनेस्टी करना कोई बहुत मुश्किल भी नहीं है. लाइक फॉर एग्जांपल इफ़ आई वाज वर्किंग इन दुबई, देयर सो मच हैपनिंग ओवर देयर, doing something really out of the box, doing something really high end is actually a little difficult. But you have the right resources over there, so it's not that you can't do it. In Pakistan, आप थोड़ा सा आप दिल बड़ा करो तो you can achieve a lot. So with that restaurant, मज़े की बात ये है कि मेरे में थोड़ा सा ये नैग है कि हर चीज़ को मैं अपस्केल करता जाता हूँ. सो दिस इज़ समथिंग प्रॉबेबली मोस्ट पीपल वुड नॉट नो. जस्ट अ फ्यू फ्रेंड्स ऑफ माइन न्यू दैट इट स्टार्टेड ऑफ एज अ रियली स्मॉल कैफ़े. मुझे लगता था 2-3 महीने में मैं बना के ख़त्म भी कर दूँगा. एंड द आइडिया वॉज दैट मैं बाहर के मुल्क जाऊँगा पढ़ने के लिए, तो उससे पहले बिकॉज लाइक सर्टन चीज़ों का मुझे शौक है, और माई फादर वॉज लाइक आई डिड नॉट वांट टू आस्क हिम कि यार मुझे ये करना है तो उसके लिए आप मुझे पैसे दें. सो आई वांटेड टू डू समथिंग ऑन माई ओन. सो मुझे लगा कि मैं जाने से पहले 2-4 महीने में इसका सेटअप करूँगा, एंड उसके बाद में लाइक आई विल बी मेकिंग अ फ्यू मिलियंस पर मंथ, और चलो ठीक है इससे निकल जाएगा मतलब छोटा मोटा खर्चा. तो बट हुआ क्या कि वन आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन इट अगेन, सबसे पहले क्या हुआ कि सर्टन प्रॉपर्टीज दैट वी ओन्ड उन सब का मैंने चक्कर लगाया, एंड देन आई फाइनलाइज दैट F72 वाली प्रॉपर्टी. और एंड आई टेल यू अनदर इंटरेस्टिंग स्टोरी रिलेटेड टू दिस. एक से एक स्टोरी निकलती जाती है. देयर आर सर्टन थिंग्स जो आप कभी किसी से सुनते हो, कहीं पढ़ते हो, एंड दे स्टे विद यू. मतलब मेरे साथ ये है कि देयर आर सर्टन थिंग्स जो कि मैंने कहीं ज़िंदगी में कहीं देखी होंगी, पढ़ी होंगी, एंड देव स्टेड विद मी. उनमें से एक ऐसा सेइंग था, मैंने कहीं पढ़ा था. इट सेड दैट इफ़ यू हैव द राइट पर्सपेक्टिव you can always convert your weaknesses into your strength. So when I visited this F72 property, because most of the restaurants were in F7 back in the day, और उस वक्त आप घरों में बना सकते थे. So and the idea was that it's going to be a cafe. 2-3 महीनों 4 महीनों में इसको complete करना है. और so इसीलिए एक ऑलरेडी जहाँ पे स्ट्रक्चर था वहाँ पे मैं उस वाले घर के ऊपर मैं गया हूँ. और and while I was in that area, मैंने देखा, मैंने कहा यार मैं फ़लाने रेस्टोरेंट गया, फ़लाने गया हूँ, वहाँ पे इतना बड़ा इंटीरियर है, उसका इतना है. मैंने कहा कि यार उन सब का इतना ज़्यादा इंटीरियर है, यहाँ पे तो खुली जगह इतनी ज़्यादा है, दिस सो मच ओपन स्पेस. सो एंड आई वांटेड टू गेट डन विद द प्रोजेक्ट एज सून एज पॉसिबल. और एकदम से दिस थिंग हिट मी. मैंने कहा यार व्हाई एम आई लुकिंग दिस एज अ वीकनेस, व्हाई एम आई लुकिंग एट दिस एज अ वीकनेस. मैंने कहा if everyone else has such big indoors, no one has this big of an outdoor जितना मेरे पास है. So I said I should not look at this as a weakness, I should look at this as a strength. So what I'll do is that I will make this into an outdoor cafe. So the idea was that it was supposed to be an outdoor space. फिर उसको वक्त के साथ like from a very basic cafe to थोड़ा सा upscale cafe, तो उससे फिर रेस्टोरेंट से फाइन डाइनिंग से बस आइडिया फिर ये था कि now I'm gonna do it, I'm spending. और मुझे हमेशा से था यार, अगर मुझे पैसों से ज़्यादा होता था कि पैसे तो लगने, कोई भी आप काम करो. मैं कहता था मेरा वक्त लग रहा है ना, सो इट शुड बी समथिंग विच शुड बी आउटस्टैंडिंग. और आपको लगता है कि आप थोड़े से एक परफेक्शनिस्ट हैं? Is that a part of your personality? थोड़ा सा नहीं, बहुत. एंड आई डोंट से इट इन अ गुड वे. इन ऑल ऑनेस्टी आई हैव रियलाइज्ड नाउ बीइंग अ परफेक्शनिस्ट होल्ड्स मी बैक. सो नाउ एटलीस्ट आई ट्राई टू ऑपरेट एट 95%, नॉट 100. अच्छा ये अलग बात है, होता नहीं है कहीं ना कहीं से लाइक हो जाता है. मैं कहता नहीं जाने दो, खैर है. बिकॉज आई नो जिस लेवल पे मैं सोच रहा हूँ, देख रहा हूँ, ज़्यादातर लोग उतनी डिटेल में जाते ही नहीं है. मतलब इन ऑल ऑनेस्टी नहीं जाता कोई. बट दैट रियली टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम. तो वो इतना टाइम लगना नहीं चाहिए किसी चीज़ के ऊपर, मुझे ये लगता है. बिकॉज अगर आपने एक चीज़ अचीव कर भी लिया है, मगर एक चीज़ आपने अगर 10 दिन में करनी थी, वो आपने 30 दिन में की, तो फिर क्या फ़ायदा हुआ. इवन इफ इट्स समथिंग रियली गुड, चलो 10 की जगह दिन लगा लो, 15 लगा लो. मिनिमम वायबल प्रोडक्ट, जिसे MVP जिसे कहते हैं. ठीक है. हाँ, so just try to get something out there जो मतलब काम चला दे शुरू में, ताकि you can improve on that. बिल्कुल. सो मतलब वही वाली बात है कि, और परफेक्ट चीज़ क्या है, परफेक्ट चीज़ दुनिया में कोई भी नहीं होती. जो आज परफेक्ट है शायद अगले दिन उससे कुछ बेहतर आ जाए. बिल्कुल. सो बट स्टिल आई थिंक ये चीज़ मेरे पर्सनैलिटी में है, बट आई एम ट्राइंग टू फाइंड द राइट बैलेंस नाउ.
एंड आपने बात की कि यार मैंने एंटोरेज बनाना था, बाहर जा रहा था, यहाँ से किचन एक्सपेंसेस वगैरह निकल जाते. डिड यू एंड अप गोइंग अब्रॉड? नो, क्यों? सेम लाइक यू नो, एक्चुअली मैं बीच में गया था. आई वाज स्टडिंग इन दुबई फॉर अ वाइल. मैं वेकेशंस में क्या कहते वापस आया था ओरिजिनली भी. उससे पहले तो मैं मास्टर्स के लिए मैंने जाना था. मैं वापस आया तो लाइक वही मेरे फादर ने मुझे क्या कहते हैं, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, उन्होंने मुझे रोक लिया. अगेन वही वाली बात, बिकॉज ही सेड दैट माई एल्डर ब्रदर वॉज ऑल्सो स्टडिंग अब्रॉड. अच्छा. तो उन्हें वॉज लाइक यू नो मेरी एज काफ़ी ज़्यादा है एंड आई वॉन्ट कि मेरा कोई बच्चा हो जो कि एक सर्टन एज का हो कि मुझे संभाल सके. जस्ट अगर मुझे खुदा न खास्ता कोई तबीयत ख़राब हो, कुछ हो तो लाइक यू नो माई फादर हैज़ प्लेड अ वेरी बिग रोल इन माई लाइफ. मैंने ज़िंदगी में जो कुछ भी किया है उनकी खुशी के लिए ही किया है. पता नहीं उनको पता है कि नहीं मगर ऐसा ही है. और एंड ही इज़ बीन अ वंडरफुल फादर. उन्होंने भी मुझे कभी ज़िंदगी में ना नहीं बोला. और अगर कोई एक आध बार बोला हो तो मेरी बेहतरी के लिए ही बोला होगा. और हाँ, आई थिंक ऐसा बस हमारा बहुत अच्छा रिलेशन है. और इट वॉज बिकॉज ऑफ हिम दैट आई कुड नॉट गो. बट आई थिंक मुझे कोई उसमें रिग्रेट नहीं है, बिकॉज वट आई लर्न फ्रॉम हिम, वट आई लर्न बींग विद हिम इन ऑल द बिजनेसेस दैट वी हैव डन टुगेदर. तो वो मुझे कोई स्कूल यूनिवर्सिटी नहीं सिखा सकता था, यू नो. बिल्कुल. तो जो उनके साथ मैंने रह के सीखा है, एंड दैट इज़ द रीज़न वाई, बिकॉज यू नो जो आप कमिंग बैक जो वो बात कर रहे थे ना, इस एज के ऊपर एक पूरा रियल एस्टेट का एक कंपनी चलाना, ये इट्स एन एम्पायर लिटरली. इट्स एन एम्पायर. तो वो ऐसा नहीं होता यूजुअली, स्पेशली पाकिस्तान में. तो मुझे मुश्किल इसलिए फील नहीं होता बिकॉज बचपन से मेरी उनके साथ ट्रेनिंग हो रही है और हमेशा उनके साथ वो मुझे हर जगह साथ लेके जाते थे. और हुआ क्या है कि बहुत सारी आपकी पैसिव लर्निंग हो जाती है. मतलब आप इवन खेल रहे हो तो आप कुछ सुन रहे हो तो आपको पता चल गया. किसी मीटिंग में गए तो मतलब यू नो आई स्टिल रिमेंबर. एक मज़े की बात आपको बताता हूँ. मैं जब आई थिंक कोई 10 एक साल पहले मे बी उनके साथ एक ऑक्शन के ऊपर गया. तो वहाँ पे फिल्में हम सब ने देखी होती हैं. तो वहाँ पे हमें पता था कि इस तरह आप रेस करो तो यू नो आपकी तरफ से बोली जाती है. तो वी बॉट अ प्लॉट इन ब्लू एरिया F9 में. तो हम जब वो ऑब्वियसली वो मुझे कहते थे ऊपर करो, मैं कर देता था. अब मेरी बस ये चीज़ थी कि बस ये हो रही है. मुझे कुछ अंदाज़ा नहीं था कि मतलब कि क्या, मतलब लोकेशन का तो पता था बट आई हैड नो आइडिया कि यार ये क्या चीज़ है, अच्छी है प्रॉपर्टी, बुरी है, क्या है. बट मेरे लिए सबसे बड़ी अट्रैक्शन थी कि मैं ऊपर कर रहा हूँ और बस हमने फिल्में देखी हुई थी. तो एंड इवेंचुअली वी वन. और आपको मैं बताऊँ दैट फीलिंग जब मैंने ऊपर किया और देन वी वन, तो वो कुछ एक अजीब सी एक फीलिंग थी. यूफोरिया सी. हाँ, इट वाज एक्सिलरेटिंग. मैं आपको मतलब ऑब्वियसली मेरा वो काम उस वक्त तो ये चीज़ नहीं थी. बट कहने का मकसद ये है कि उसके साथ अब मैं किसी ऑक्शन पे जाता हूँ तो मैं तो ये करता ही नहीं हूँ, मतलब माई टीम डज इट. तो मगर कहने का मकसद ये है कि छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, आप अलॉन्ग द वे सीखते रहते हैं, इंजॉय भी करते हैं, बोर भी होते हैं, मगर एट द एंड ऑफ द डे आप सीख जाते हैं. तो उनके साथ इतना मैंने रह के सीख लिया है कि एंड ही इज़ द काइंड ऑफ पर्सन, वो मतलब जो दूर का नुकसान होगा वो पहले देखेंगे. सो ही इज़ दैट काइंड ऑफ अ पर्सन. नहीं, और आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि मैं हमेशा लोगों को कहता हूँ ना, लोग कहते हैं यार फलां इंडस्ट्री में नेपोटिज्म है या यहाँ पे देखिए, डॉक्टर का बच्चा जी डॉक्टरी आदि सीख लेता है क्योंकि डिनर टेबल कॉन्वर्सेशन होती है. बिजनेसमैन का बच्चा बेहतर बिजनेसमैन इसलिए बनता है, या फुटबॉलर का बेटा फुटबॉलर बनता है, या क्रिकेटर का बेटा या एक्टर का बेटा. उसकी वजह ये होती है कि यू सी इट, यू लिव इट. हाँ जी. आपके वालिद साहब ऑक्शन पे जा रहे हैं तो आप ऑक्शन पे जा रहे हो, डाउनलोड हो रही हैं चीज़ें. जी. बेशक आपको पता भी ना हो कि हो रही हैं, लेकिन आपकी एक वो पर्सनैलिटी बन रही होती है. एंड यू डोंट रियलाइज दिस, और नो वन रियलाइजेज दिस टिल देयर अ सर्टेन एज, कि यार कितना इम्पैक्ट हुआ है मेरी जिंदगी में बस बीइंग अराउंड थिंग्स. जिस तरह एक एक्टर का बेटा होगा तो विल बी अराउंड सेट, आप होंगे तो विल बी अराउंड थिंग्स रिलेटेड टू रियल एस्टेट एंड डेवलपमेंट्स. तो इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं. बट इन योर ओन पर्सनल कैपेसिटी, आपने जिस तरह एंटोरेज एक्सपीरियंस किया, दैट वाज अ बिग पार्ट ऑफ योर लाइफ इन टर्म्स ऑफ अ वेंचर यू डिड ऑन योर ओन, समथिंग रियल एस्टेट से हट के. क्या वो चीज़ें हैं जिसमें आप इंटरेस्टेड हैं जो रियल एस्टेट से हट के हैं?
आई थिंक दैट वुड बी अ डिफरेंट पॉडकास्ट ऑल चलिए टुगेदर fair enough. हाँ, वो आपको हैं काफ़ी हैं अच्छा और क्या कहते हैं आई थिंक अभी जब अभी थोड़ा वक्त मिलेगा तो उनको भी एक्सप्लोर करेंगे बिकॉज आई थिंक आई एम सेट विद रियल एस्टेट नाउ मेरी एक पूरी टीम है और अब चीज़ें चल रही हैं एंड माई फादर इज़ वेरी हैप्पी विद मी नाउ मेरे लिए सबसे बड़ी अच्छी बात ही है तो हाँ बहुत सारी और चीज़ें हैं और क्या कहते हैं एंड आई एम अ ड्रीमर सीधी सी बात है यू नो And you seem like the kind of guy who likes the luxurious life, right? Like someone who likes to do grand things. So I'm imagining कि जो आपकी और भी business lines होंगी या जो आपके जहन में चीज़ें हैं will have something to do with the glitz and glamour of life, huh? Or is that something that I'm getting wrong? नहीं दैट्स ट्रू देखें आप उसको लग्जूरियस बोल सकते हैं देखें कोई भी चीज़ बेस्ट अगर होएगी या बेहतरीन होगी या बेहतरीन में से एक होगी तो आप उसको अच्छे का ख़ताब दे दें लग्जरी का ख़ताब दे दें रियल एस्टेट में तो अगर ऑब्वियसली आप बहुत अच्छी चीज़ बना रहे हैं तो ऑटोमेटिकली लग्जरी सेगमेंट में चला जाता है बिल्कुल आप कोई दुनिया की बेहतरीन अगर गाड़ी चलाना चाह रहे हैं वो ऑटोमेटिकली लग्जरी सेगमेंट में चला जाएगा या आप कोई कोई भी चीज़ बेहतरीन आप करना चाह रहे हैं सो पर्सनली जो मेरी कोशिश होती है वो ये होती है कि कम काम करो सुथरा काम करो और बेहतरीन काम करो कि वो वाला काम करो कि आपसे बेहतर कोई ना कर सके आप खुद भी बेहतर उससे ना कर सको in that moment and hopefully later on you'll evolve and you'll even beat yourself so my competition has always been with myself कि यार ये मैंने किया अब इससे बेहतर मैंने करना है so yes that's true in all that I do I try कि मैं जो भी काम कर रहा हूँ वो बेहतरीन करूँ सबसे बेहतर करूँ अब वो हो पाए ना हो पाए एक अलग बात है वो दैट्स फॉर पीपल टू डिसाइड ठीक है ना किसी को अच्छा लगेगा किसी को अच्छा नहीं लगेगा किसी को बहुत अच्छा लगेगा बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि आपका जेन्युइन एफर्ट लगना चाहिए सो इफ़ यू पुट योर 100% तो बस दैट्स मोर देन इनफ चलो मेक सेंस अच्छा यार समाम I'm not going to ask too many more questions I know आप काफ़ी बिजी आदमी है लेकिन I have one question ऑब्स्टिकल्स होती है ना ज़िंदगी में जी they don't necessarily have to be related to your business right so you could have gone through any sort of thing maybe high school university में जिसमें आपका एक ना लीडरशिप स्टाइल सामने आया हो तो मैं लोगों को हमेशा ये कहता हूँ कि देयर आर सर्टेन थिंग्स आई डिड इन हाई स्कूल देयर आर सर्टेन थिंग्स आई डिड इन यूनिवर्सिटी जो आज मेरी ज़िंदगी में मुझे बहुत फ़ायदा देते हैं बिकॉज इट वाज अ टफ सिचुएशन आई रिमेंबर फॉर एग्जांपल स्पोर्ट्स बड़ा एक मेरे लिए इस तरह की चीज़ थी या वी डिड लाइक अ स्कूल प्ले एंड डायरेक्टिंग दैट वाज अ पार्ट ऑफ मी ग्रोइंग अप what are the sort of moments that have been a part of your journey? I know you're only 32, so the journey is just getting started. Like, what are like some highlights from Entourage to other things? In terms of leadership or in terms of something that I remember that I really Something that had an impact on you, on Samama Randhawa, on making you who you are today. um, I think one of the things that I recall and that brings a smile to my face is that, and it was also one of those things in which it was something that I feared, and that's why I was not gonna do it because I don't like to lose. So I did not want to put myself in a predicament in which I could lose. It was basically I ran for president in my college. Acha, which college were you in? In UCI. Acha, take it. So when I was thinking of running for college, it's a long story, but my friend ran for president and he lost the year before, and the Elections next होती थी? election होता था. अच्छा, तो ठीक है. उसके अंदर लाइक ही रैन फॉर इलेक्शन जो हमने कैंपेन किया तो मतलब बड़ा मज़ा भी आया उस इलेक्शन कैंपेन में बट वी लॉस्ट इट्स फाइन माय फ्रेंड लॉस्ट तो क्या कहते हैं बट द नेक्स्ट ईयर कुछ ऐसी चीज़ें हुई लाइक आई वाज़न्ट गोना रन मेरे माइंड में भी नहीं था बट आई थिंक द अदर साइड गॉट टू कॉकी एंड दे वर लाइक के वी वन लास्ट टाइम उससे पहले भी हम जीते सो लाइक दे गॉट सो कॉकी दे वर लाइक ये हम इतना अच्छा करें कि लाइक उस तरफ से इस बार कोई खड़ा ही नहीं हो रहा सो दैट वाज समथिंग दैट हिट मी आई वाज लाइक और मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि मैं इलेक्शन में खड़ा हूँगा वो मुझे बात बुरी लग गई एंड आई वाज लाइक ये चीज़ नहीं कहनी चाहिए थी एंड देन आई वाज लाइक अच्छा आई विल रन फॉर प्रेजिडेंट अच्छा एंड माई फ्रेंड्स वर लाइक यार तुम क्या कर रहे हो स्पेशली माई फ्रेंड who had ran for president, in his humble opinion, he said that यार छोड़ो इसका कोई फ़ायदा नहीं हमारे कॉलेज हमारे एग्ज़ाम्स भी कुछ देर बाद ही हुआ करते थे. He was like it's better that you concentrate on your studies.
आई वाज लाइक नहीं यार, आई एम गोना रन फॉर प्रेसिडेंट. अच्छा, अब सोच लिया, बट इट वाज अ इंटरनल डिस्कशन. थोड़ी देर मैंने सोचा, फिर वो चीज़ आना शुरू हो गया. वाज लाइक कि यार, आई एम नॉट द सॉर्ट ऑफ पर्सन जो लोगों को पास जाए बोले यार मुझे वोट दो, ये करो वो करो. इट्स नॉट वेरी ईजी, मतलब बिकॉज उस वक्त तो जोश में सोच लिया कि आई एम गोना रन फॉर प्रेसिडेंट. मगर उसके बाद में सोचा यार मुझे लोगों के पास जाना पड़ेगा, मुझे वोट मांगने पड़ेंगे और पता नहीं क्या क्या करना पड़ेगा. और उसके बाद ख्याल ये आया कि वो सब कुछ तो चलो ठीक है, उसके बाद में अगर हार गया तो वो कैसे बर्दाश्त करूँगा. तो बट द थिंग वाज दैट एक ख्याल मेरे बाद में कुछ दिनों में आया, बिकॉज ऑब्वियसली ये नहीं कि मैंने सोचा और अगले दिन मैंने बोल दिया कि एप्लीकेशन दे दी कि मैं खड़ा हो रहा हूँ. तो उसमें हुआ कि यार, इफ़ आई डोंट स्टैंड फॉर प्रेजिडेंट, fearing that I will lose, then I will also lose the chance of winning. और आई सेड कि यार ये बहुत बुरा माइंडसेट है कि यार हार से डर के आप कोई जीत चीज़ की करो ही कोशिश ना करो. ठीक है ना. बिल्कुल. सो आई वाज लाइक कि यार अगेन तब वही वाला एक होता है ना, आपका एक माइंडसेट तो कहीं ना कहीं आपके सबकॉन्शियस में होता ही है. सो आई वाज लाइक यार आई विल गिव माई बेस्ट, ठीक है ना. और उसके बाद जीत गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं जीत गया तो कोई मसला नहीं है. इट वुडंट मेक मी एनी लेस ऑफ अ मैन एनीवे. तो उसके बाद में फिर मैं कॉलेज के लिए प्रेसिडेंट के लिए मैं खड़ा हुआ, कैंपेन की, और बड़ा मुश्किल था. और मतलब मुझे समझ नहीं आती, हमारे मुल्क में काफ़ी पॉलिटिकल टर्मोइल है. मगर उन इलेक्शंस के थ्रू जब मैं गुजरा तो मुझे पता चला कि सियासत बड़ी मुश्किल चीज़ है और इलेक्शंस में क्या क्या कुछ हो सकता है, उस पर बड़ी सही गलत एलिगेशंस, ये वो इस तरह की चीज़ें. बट हुआ क्या कि इवेंचुअली I won, अच्छा. and I won by double the lead. और and I was the first president in my college जो कि 2 साल के लिए रहा, एक अच्छा. साल के लिए रहता था. और जो मेरा दूसरा साल था, जब मैं जीता हूँ, तो दूसरे साल के अंदर क्या कि आई wouldn't really go to college that much क्योंकि मेरे एक आध यूनिट रह गया था. सो आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन Entourage. तो Entourage के ऊपर भी मैं काम कर रहा था और बाकी कॉलेज में कभी कभी थोड़ा बहुत चला जाता था. बट येस, दैट वाज वन थिंग दैट आई recall, and I really it really makes me happy. और हाँ, इस पूरी जर्नी में एक और मज़े की चीज़ हुई, वो ये हुई कि जो परसेप्शन होती है किसी के बारे में, ठीक है ना, वो कभी कभी आपको ले भी डूबती है और कभी कभी आपको फ़ायदा भी दे देती है. तो हुआ क्या कि जैसे आपको मैं बोल रहा था कि जो पूरा इलेक्शन का प्रोसेस था काफ़ी डिफ़िकल्ट था. तो फर्स्ट तो दे थॉट, बिकॉज मेरा एक सर्टन ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स था और Were you social? सोशल था, मगर जो लोग जैसे कॉलेज के अंदर बहुत ओवर सोशल होते हैं ना, आई जस्ट टेंड टू कीप टू माई सेल्फ. आई स्पीक टू द पीपल दैट स्पीक टू मी, स्पेशली उस वक्त. अब तो लाइक थोड़ी चीज़ें बदल गई हैं, बट अभी भी कुछ हद तक आई टेंड टू कीप टू माई सेल्फ. बट उस वक्त तो और भी ज़्यादा. बट आई हैड लाइक काफ़ी अच्छे खासे दोस्त यार सब थे, सारे कॉलेज में सब जानते थे, सबसे अच्छा ताल्लुक वास्ता था. मगर कुछ लोग होते हैं ना जो ओवरली सोशल होते हैं और ज़्यादा वोकल होते हैं. सो दैट साइड ऑफ माई पर्सनैलिटी ओनली माई क्लोज फ्रेंड्स न्यू. तो हुआ क्या कि इस सब के अंदर व्हाट दे डिड वाज दैट दे ब्रॉट बैक दिस थिंग. एक स्पीच हुआ करती थी जो कि बहुत सालों से 3 4 5 सालों से स्पीच नहीं हुई थी. सो दे थॉट कि यार समामा चुपचाप रहता है तो इतने सारे लोगों के सामने बोल नहीं पाएगा. द अदर पर्सन दैट वाज स्टैंडिंग, तो क्या कहते हैं, उसने कहा कि यार चलो, मतलब उसने या उसके एडवाइजर्स ने कहा, सो हम और लोगों से बाद में सुनते थे. तो क्या हुआ कि उन्होंने कहा इस पर स्पीच रखते हैं, समामा बोल नहीं पाएगा सबके सामने. ऑब्वियसली कॉलेज के सामने बात करना इतना आसान नहीं होता. तो बट ये उनका पर्सपेक्टिव था. तो हुआ क्या कि मुझे पता चला कि स्पीच करनी है, तो मैंने कहा कर लेंगे, ठीक है ना. और ऑब्वियसली वो इट वाज सच हेक्टिक लाइफ बैक देन कि पढ़ना भी है, कॉलेज भी जाना है, कैंपेन भी करनी है, 100 चीज़ें चल रही हैं. तो उस वक्त क्या हुआ कि काफ़ी लंबी कहानी, उसको मैं कट शॉर्ट कर लेता हूँ क्योंकि उसके पीछे एक और कहानी थी, एक और कहानी थी, इसकी भी डिफरेंट पॉडकास्ट हो जाएगी. तो एक उन्होंने र्यूमर फैला दिया मेरे बारे में, जिससे वो कह रहे थे कि जी विच शोकेस्ड मी कि यार ये लड़का बहुत एरोगेंट है और ये कह रहा है कि मैं तो जीत रहा हूँ
तो मुझे मतलब किसी की वोट की ज़रूरत नहीं है, और इस तरह की एक फॉल्स प्रोपेगेंडा उन्होंने बनाया था. कैसे बनाया वो एक अलग कहानी है. बट एनीवे, तो मैं छोटी मोटी सी स्पीच हमने लिखी हुई थी, वो मैं कर रहा. तो वो लास्ट मिनट एक दोस्त आया, उसने एक मुझे एक चीज़ बताई, उसने कहा इस तरीके से इम्प्रोवाइज़ कर लेते हैं. मैंने कहा ठीक है. तो फिर जब मेरी बारी आई, हम वहाँ पे मैं गया हूँ, वहाँ पे मैंने स्पीच की है, और मुझे तो कोई मसला नहीं था स्पीच करने के अंदर. उनके लिए थोड़ा सा शौक था. अब अगेन यहाँ पे बात आ जाती है कि वो जो आपको मैंने बात बताई थी ना, इफ़ यू हैव द राइट पर्सपेक्टिव यू कैन ऑलवेज कन्वर्ट योर वीकनेसेस इनटू योर स्ट्रेंथ. तो जो सारा मतलब पॉपुलैरिटी मेरी अच्छी थी इलेक्शन के अंदर, लोग वोट करना चाह रहे थे, मगर ये फिर एक एलिगेशन आ गया था कि ये एरोगेंट है, ये कह रहा है कि मैं जीत रहा हूँ, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता. अगेन लंबी कहानी है. तो एंड में क्या हुआ कि मैंने पूरी अपनी कर ली, क्या कहते हैं, स्पीच पूरी कर ली, और उसके बाद में मैं रोस्ट्रम से हटा हूँ. और फिर मैंने उनको बोला कि यार, मैंने कहा इन दी एंड कैन एवरीवन प्लीज़ स्टैंड अप. तो अच्छा हाँ, नहीं, उससे पहले मैंने बोला था, मैंने कहा यार, और ऑल्सो लाइक यू नो अभी मुझे पता चला है कि मेरे बारे में एक थोड़ा सा एक र्यूमर चल रहा है कि मैं बहुत लाइक कि मैंने ये बोला कि मैं जीत रहा हूँ, मुझे वोट्स की ज़रूरत नहीं, इस तरह की कोई बात हुई. तो फिर इसको आई थिंक शायद मुझे पूरी तरीके से याद नहीं, शायद मैंने इसको एड्रेस किया था. तो रोस्ट्रम से मैं अपनी स्पीच करके जो एक्चुअल जो स्पीच थी उससे मैं हटा हूँ, और फिर मैं साइड के ऊपर आया. मेरे सामने फिर पूरा कॉलेज खड़ा है, सारे का सारा बैठा हुआ है बेंचेस के ऊपर. मेरी प्रिंसिपल भी थी, शी इज़ अ स्वीट हार्ट, तो वो भी वहाँ बैठी हुई थी. और मैंने इनको बोला, मैंने कहा इन दी एंड कैन एवरीवन प्लीज़ स्टैंड अप. तो लोग एकदम से कंफ्यूज हो गए कि यार ये क्या हुआ, और एक मुझे याद है एक दूसरे को देख रहे हैं कि यार ये हम उठें ना उठें. तो मैंने फिर से रिपीट किया, मैंने कहा प्लीज़, मैंने कहा नाउ प्लीज़ कैन एवरीवन स्टैंड अप. तो एक दूसरे को देखते देखते ना खड़े हो गए. तो अब मैंने कहा नाउ कैन एवरीवन मूव टूवर्ड्स द राइट. तो उन्होंने क्या, तो मैंने उनको बेसिक नहीं बल्कि बोला था, मैंने कहा कैन एवरीवन टेक वन स्टेप फॉरवर्ड. तो वो सारे एक दूसरे को देख के वो आगे हुए. मैंने कहा नाउ वन स्टेप टू द राइट, फिर राइट हुए. मैंने कहा वन स्टेप बैकवर्ड्स, वो पीछे हुए. फिर मैंने कहा वन स्टेप लेफ़्ट, तो वो लेफ़्ट पे हो गए. अब उनको मैंने ऐसे 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 घुमाया. अब वो जहाँ से स्टार्ट हुए थे ना, मेरे कहने पे आगे गए, इधर गए, इधर गए, इधर गए, और वहीं पे वापस आ गए जहाँ पे वो जहाँ से उन्होंने स्टार्ट किया था. तो मैंने फिर उनको एंड में बोला, मैंने कहा कि मैंने कहा कि ऑन माई वर्ड आई मेड द होल कॉलेज डू एज आई से. जहाँ से आप लोगों मैंने स्टार्ट किया, मैंने आपको जो बोला उसकी बेस के ऊपर आप लोग सब ने मूव किया. और जहाँ पे मैंने आपको कहा, मतलब मेरी आवाज़ में इतनी पावर है कि मैंने पूरे कॉलेज को हिला के उसी जगह पे ले आया हूँ जहाँ पे स्टार्ट किया था. तो फिर मैंने बोला, मैंने कहा नाउ इफ़ आई वॉज एरोगेंट आईड कॉल दिस पावर, बट फॉर मी दिस इज़ यूनिटी. जब ये वाली मैंने बात की तो द होल प्लेस इरप्टेड, और सब ने मुझे कंधों पे उठा लिया. ओनली बिकॉज एक इतनी नेगेटिव चीज़ मेरे बारे में जा रही थी कि ये लड़का एरोगेंट है. तो मैंने सिर्फ प्रूव करना था ये चीज़ करके कि अगर मैं एरोगेंट था तो मैं ये कहता कि ये अब पूरे कॉलेज को मैंने अपनी एक वर्ड के ऊपर घुमा दिया और वहीं पे ले आया. बट मैंने कहा दिस फॉर मी इज़ यूनिटी, दिस नॉट एरोगेंस. And I have a question, last question, and then we'll call it a day. Do you ever want to get into politics? No. Like Election क्या आपने Yeah, अभी interesting और engaging stories सुनाई. जी. So no plans, no ministership, no prime ministership, nothing, no plans. not at all. कॉलेज इलेक्शन अच्छा था. इट वाज लाइक एक पॉलिटिक्स थी भी, तो मतलब वो बचपन की पॉलिटिक्स थी, डिफरेंट थी. मैंने कभी नहीं सोचा पॉलिटिक्स क्या आने के अंदर, बट सुन के लाइक मज़ा आया कि आई वाजंट एक्सपेक्टिंग दिस कि ये सुनूंगा. बट हाँ, ये बिल्कुल नहीं. चलें यार, it was an absolute pleasure having you on the podcast, and inshallah we'll see you again soon. Thank you guys for watching, and if you like the content, please do subscribe to our channel.